So wishing you all a very good evening and a formal welcome to our resource person, Dr. Priyanka. Priyanka ma'am, once again, I welcome you from my core of heart. Dear audience, I would like to introduce you with Dr. Priyanka. Although she does not require any of the introduction, as Priyanka ma'am, she's practicing as consultant psychiatrist. She's child and adolescent specialist, and she's also the director of Global Wellness Center, which is the only center in the North to cater to child and adolescent behavior and mental health. She has done MD in psychiatry from Government Medical College. And after doing MD in psychiatry, she has further done DNB also in psychiatry and is certified by State University of New York in attention deficit hyperactivity disorder, which is going to be our major of the topic of the day. It believes in working towards providing the best healthcare to young persons through her counseling, and her therapies are a great success. Thank you so much, Dr. Priyanka, for joining us and for sparing your valuable time. Thank you so much. So, Dr. Priyanka, our audience is looking forward for your keen session. I hope that they will be answered with all of their queries. Over to you, Dr. Priyanka. Thank you so much. Thank you once again for inviting me. I would like to start my session by talking about what is the relationship between a teacher and a student. So I read this that a mentor and disciple, they share a relationship like that of a needle and a thread. The needle guides the thread and keeps moving until the thread forms a stitch, and stitch is what holds the fabric in place while the needle moves on to the next thread. So with that gratitude and respect to all the teachers attending the session today, I want to thank you from the bottom of my heart for doing such good work for children and for guiding and mentoring them in a way that shapes their entire life. Having said that, today I am going to attempt a session on webinar. Generally, I am more accustomed to offline sessions, but then I think COVID did teach us a couple of things, so I will try. And I do like a lot of interaction between my sessions, so feel free to type in anything, any questions, any queries you feel that you want to talk about, or any discussions that you want to start. I would love to answer them as and when they arrive within the session. So my overview is I'm going to talk majorly about behavior problems. And I'm sure that we all face our good share of the problems when we teach children, or when we deal with families, or when we have interactions with students. And my major focus is going to be talking about ADHD, which is attention deficit hyperactivity disorder. If time permits, I will be discussing a little bit about bullying. And then there's a simple and a very, very effective way of handling problems, that is communication. I'll be just trying to spread some light on that. So before I begin, I would invite certain inputs from teachers, and I would ask them to tell me what are the classes that they teach, or what is the age group of children that they deal with, so that I can orient my talk more according to the needs of the audience. So yes, sir. You may definitely, as Priyanka ma'am is saying, that you may definitely post message in chat box so that ma'am can check that you people are, if you are a teacher, then to which grade you are teaching, and if you are a parent, then what are your queries? Yes. So now I'm going to ask you a few questions. This is primarily for teachers, that for teachers especially, do you feel unsure sometimes? These questions, you can answer them in A, B, or C. A is for never, and B is for sometimes, and the C is for always. And these questions, you may note down the answers in your notebook or in your phone, and then we can talk about it. So the first question is, when you enter your class, how unsure you feel of handling the class? Is it never, sometimes, always? My next question is, do you feel exasperated at the thought of one or two students that you feel may be difficult?
And in the same way, I think that goes for parents, that you feel that in your day, you will find it very difficult to handle one or both of your children during the day. Are there any encounters of teachers with parents who have been really unhappy with your findings? Or do you get exhausted while taking care of the students in your class and you feel very, very helpless at how students behave, or particularly one or two students behave in your class? And my last question is, do you wish that one or maybe more of those children who are very difficult to handle are transferred to another class? Now, all of these are not unreasonable things. Sometimes we are trying our best to do the best in our capacity, but still we are not able to take care of one or two children that are always energetic, always fidgeting, not listening to commands, creating a lot of nuisance. There's discipline issues with them. They're always fighting or picking up fights. They're teasing other children. We all face that, right? So how do we handle this problem? So I'll tell you a case of Varun. Varun is a class 6 student. His teacher finds it difficult to teach when he's present in the class, and he simply cannot sit still. Either he's poking somebody, or he's tearing the paper, or he's talking to somebody or looking elsewhere. His homework is never complete, and he cannot copy from the board. He fidgets around, runs out of the room, speaks out of turn, and he ends up disturbing his whole class. His mother reports similar behavior in the home. He loses stationery items, he loses his water bottle, tiffin, his belongings, and is quote unquote termed as the naughty or the indisciplined child. Does that sound familiar to you? I can have a thumbs up or a raise of hands in chat box to just know that you people are attentive and you are paying constant attention to the questions that I am discussing here. Does it sound familiar? Yes, yes. We got a message from Miss Richa is responding that yes. The answer is yes. Okay, we are waiting for more response. The audience, this session is for you guys, and you need to respond so that Priyanka ma'am can better answer your queries. So yes, Puna ma'am is saying yes. Thank you so much. Mati Bala is saying yes. Okay. Yes. So, right. So, does that sound familiar to you? My next question here is, we are talking about ADHD. I hope some of us are really familiar with the whole entire term ADHD, that is called attention deficit and hyperactivity disorder. Here we have three domains. First is hyperactivity. Hyperactivity talks about the inability to sit still in a classroom, to have difficulty in controlling their motor movements. And sometimes you'd find these children, they are constantly tapping the desk, or they're moving their feet, or they're clicking their pencils, they are poking other children. So this is general hyperactivity. If the children are too young, then they will find it very, very difficult to sit within the classroom. They want to run out without the instructions being given. There is impulsivity, where they will find it difficult to wait for their turns. Like teacher would not have finished the question and the child would want to answer the question. And they'd raise their hands out of turn, they'll speak out of turn, or they'll say unkind things without thinking about what they are doing. It is generally observed as a situation where the child promptly speaks something rude and then may or may not regret it later. The third is inattention. Inattention is very commonly it is explained by the teacher or explored by the teacher in the form that the child is not listening to them. They zone out. They look out of the classroom, or they are not focused, or they're not paying attention within the classroom. Inattention is also observed in their written notebooks, where they do a lot of silly mistakes in the spellings. Like, for example, if it's a maths exam, they'll copy it wrong, or they'll forget to mark the questions written on the back side of the question paper. Or there will be mistakes like, spelling mistakes, or common errors like they'll not dot their I's, or they'll not cross their T's. There'll be grammatical errors, there'll be punctuation errors. So these are really, really common in children who have inattention.
Many times when the instructions are given simultaneously, like 2 to 3 instructions are given at a stretch, then children find it very difficult to sort of comprehend them, and they forget, they lose the trail of their thought in between. Many times teachers feel that these students have a fantasy world of their own and they're thinking about something or they're creating stories. तो This is इसमें very क्या common रहेगा कि problem, बच्चों को doctor. जो अटेंशन है वो मेंटेन करने में मुश्किल आएगी और वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे और उनको हाइपर एक्टिविटी होगी। तो हमें जब मुश्किलें नजर आएंगी क्लासरूम में, तब हम उन मुश्किलों को कैसे हैंडल कर सकेंगे, ऐसा हम इस सेशन में सीखेंगे। सो इसके अराउंड बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते हैं। सिंस हम लोग इन अ क्लिनिक वी टेक केयर ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, तो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो पेरेंट्स हमसे पूछते हैं वो ये है कि ये मेरे बच्चे को क्यों हुआ, क्या मैंने अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दिया इस वजह से हुआ, एम आई नॉट अ गुड पेरेंट, और डिड आई रियली एक्सपोज देम टू अ लॉट ऑफ टीवी, डिड दैट हैपन बिकॉज ऑफ दैट, और मैं बहुत स्ट्रिक्ट थी या मैं बहुत इग्नोर किया मैंने अपने बच्चे को उस वजह से हुआ। सो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो एडीएचडी है वो सिर्फ एक बिहेवियर प्रॉब्लम नहीं है जिसको हम ठीक कर सकते हैं, वो एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि जब बच्चा कंसीव होता है उस समय से मदर को प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब बच्चे के माइंड की डेवलपमेंट में उस तरीके की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। सो इट्स लाइक जो ब्रेन के सर्किट्स हैं हमें अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन करने में मदद करते हैं, वो सर्किट्स ही हमारे जो हैं वो चेंज्ड है या वो किसी तरीके से गड़बड़ है, और ये बैड पेरेंटिंग की वजह से नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स ऐसा जरूर हो सकता है कि अगर हम बच्चे को बहुत ज्यादा टीवी दिखाते हैं या अगर हम निग्लेक्टफुल हैं, जैसे हम हमारे क्लिनिक में क्या करते हैं ना, जब पेरेंट आता है तो हम उनका एक पेरेंटिंग स्टाइल क्वेश्चनर आइडेंटिफाई करते हैं कि वो पेरेंट अपने बच्चे की पेरेंटिंग कैसे करता है। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल दैट वी सी, दैट इज अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, नेग्लेक्टफुल एंड पैसिव। तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि पेरेंट वन मतलब मदर का और फादर का पेरेंटिंग स्टाइल कैसा है, और हमारा एक गोल रहता है कि दोनों का पेरेंटिंग स्टाइल हम सेम करें, ताकि जब बच्चा किसी चीज के लिए जिद कर रहा है और एक पेरेंट ने मना कर दिया तो दूसरे पेरेंट के हाँ करने पे बच्चा सिचुएशन को मैनिपुलेट ना करे कि मम्मी मना हमेशा करती है तो पापा से मांग लो। सो वी हैव टू सेट अप सम रूल्स बिटवीन द फैमिली कि पेरेंट्स कुछ चीजों के लिए फर्म ग्राउंड एस्टेब्लिश करें दैट बोथ ऑफ देम अग्री और डिसअग्री ऑन द सेम थिंग्स। जब हम एडीएचडी के बारे में बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि ये जन्म से है या जन्म से पहले से है बच्चे को, तो कितनी देर तक ये रहेगा, क्या पूरी उम्र बच्चे को ये प्रॉब्लम रहेगी? तो इसका जवाब ये है कि कुल मिलाकर 10% बच्चे ऐसे हैं जो इसको लाइफ लॉन्ग कैरी कर लेते हैं, काफी बच्चे जो इसको कंट्रोल कर पाते हैं। और जेनेटिकली अगर आपका एक बच्चा जिसे एडीएचडी है, क्या बाकी बच्चों को भी होगा? सो अगर हम देखें कि जनरल पॉपुलेशन के मुकाबले में बच्चों में प्रॉब्लम ज्यादा होगी, 30% चांस ज्यादा है कि अगर आपके एक बच्चे को प्रॉब्लम है तो दूसरे को भी होगी। अब इस इंफॉर्मेशन को हम अपने स्कूल्स में कैसे यूज कर सकते हैं? अगर हमारे स्कूल्स में सिबलिंग्स हैं, बच्चे हैं, तो हमें रियलाइज हो जाता है कि दिस चाइल्ड हैज एन एल्डर सिस्टर इन अनदर क्लास, तो शायद उसको भी बिहेवियर प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत रही होंगी, इफ नॉट टू दैट एक्सटेंट। हाँ, ये भी जरूरी नहीं है कि अगर एक सिबलिंग को बहुत सिवियर प्रॉब्लम है तो दूसरे को भी उतनी सिवियर होगी। समटाइम्स इट कैन वेरी इन द अमाउंट ऑफ सिवियरिटी द चाइल्ड इज प्रेजेंटिंग विद। और लास्ट क्वेश्चन मुझसे जो पूछा जाता है, मैम यू वांटेड टू आस्क समथिंग? Yes, ma'am. या I was just wanting to ask, as you said, is it like possible that if one child is having ADHD issue, second is not having, or there would be something ऐसा कि पॉसिबल दूसरे है? में भी होगा ही See, होगा? around 70% of cases it is possible. Okay. और अगर जीन जेनेटिक लोडिंग है भी है कि मान लो फादर को भी था, और कई बार क्या होता है कि अगर हम आज की जनरेशन के बच्चों को देखें जिनको हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, इससे ऊपर की जनरेशन जो उनके पेरेंट्स हैं उनमें अगर चांसेस होंगे भी तो कभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ होगा, बिकॉज एडीएचडी एज अ टर्म नेवर गेन दैट काइंड ऑफ अटेंशन और नोटिस अमंगस्ट द डॉक्टर्स व्हेन द पेरेंट्स वर ग्रोइंग अप। सो उनको शायद पेरेंट्स को ये
आइडेंटिफिकेशन रही ही नहीं होगी, पर वो इग्नोर होते चले गए होंगे कि ये तो गुस्से वाला है, ये पढ़ाई में ज्यादा तेज नहीं है, और ये इम्पल्सिव है तो इसके साथ ज्यादा गुस्सा नहीं करना। पर अंडरलाइन इन प्रॉब्लम के कुछ नाम है, और अगर हम वो नाम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वो क्यों जरूरी है, ताकि हम बच्चे को सही तरीके से गाइड करके उस प्रॉब्लम से निकाल सकें, और उसके लिए जो सोशल सराउंडिंग्स हैं वो और ज्यादा बेहतर बना सके, ताकि वो उसमें अडेप्ट और एडजस्ट हो जाए। लास्ट क्वेश्चन जो आता है कि क्या हम इसको क्योर कर सकते हैं? हाँ, जड़ से तो शायद हम नहीं खत्म कर सकते, बिकॉज एज आई सेड कि अगर मान लो आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड का चिप जो है उसके सर्किट्स किसी तरीके से डिजाइंड हैं, तो वो आप कंप्लीटली बदल नहीं सकते हो, दे विल रिमेन लाइक दैट, बट यस यू कैन लार्जली मैनेज इट टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट, अगर आप सही तरीके से अकोमोडेशंस की यूटिलिटी करो। अभी तक जो हमने डिस्कस किया, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस अराउंड दैट? Yes, So this is a vicious cycle. yeah. Are there questions? You may type in. I know actually I have muted the participants so that there should not be any unnecessary noise. But the chat box is open. You may definitely post your messages or the queries simultaneously in the chat box. So we'll be putting it forward. Thank you. Right. So when we talk about ADHD, generally we talk about a quote unquote child who is labeled naughty and careless, and the child who cannot really study. So वो बच्चे को हम बोलना शुरू कर देते हैं कि ये तो नॉटी है, ये तो ध्यान ही नहीं रखता, ये पढ़ नहीं सकता। तो वो बच्चे को हम कई बार ऐसा बोल देते हैं कि इसने तो पढ़ना ही नहीं है। तो जब हम ऐसे स्टेटमेंट्स बच्चों को बोलते हैं तो उनके मन में आ जाता है कि अच्छा, सबने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं नॉटी हूं, तो फिर मैं क्यों पढ़ूं? What is the point of studying? So now we are viewing this problem from the perspective of the child. अगर हम उस बच्चे के बारे में सोचें जिसको हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही है, या उसको अटेंशन मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो बच्चा जो है वो अपनी रिटन नोटबुक्स नहीं कंप्लीट कर पाएगा, रिटन वर्क फिनिश नहीं होगा, असाइनमेंट्स फिनिश नहीं होंगे, तो मम्मा क्या करेगी, शाम को आके खुद पढ़ाएगी। फिर उसके बाद मम्मा एक्स्ट्रा ट्यूशंस भी रख देगी कि चलो अगर रिटन वर्क फिनिश नहीं हो रहा तो ट्यूशन टीचर पढ़ाएगी। सो द चाइल्ड इज स्टडिंग इन द मॉर्निंग, स्टडिंग इन द आफ्टरनून, स्टडिंग इन द इवनिंग एंड द ट्यूशंस, एंड देन अगेन द चाइल्ड इज नॉट एबल टू स्कोर बिकॉज अंडरलाइंग प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ ही नहीं। तो जो टाइम बच्चा स्पोर्ट्स में बिता सकता था, एक्स्ट्रा क्लासेस में बिता सकता था, उस सब में बच्चे की सेल्फ एस्टीम पे क्या गुजर रही है कि वो पढ़ता नहीं है, क्लासरूम में भी मार्क्स नहीं लेकर आता, स्टडी नहीं कर पाता घर के अंदर, तो मम्मा डांटती है और ट्यूशन टीचर भी डांटती है बिकॉज देयर इज प्रॉब्लम इन स्टडी। नाउ ऑल ऑफ अस नीड वन थिंग, दैट इज अप्रिसिएशन, कि कुछ भी हम करते हैं हमें कहीं ना कहीं से किसी ना किसी फॉर्म में एक्नॉलेजमेंट चाहिए। खाना अच्छा बनाया, रोटी अच्छी बनाई, तो कोई बोल दे कि आज तुमने बड़ा अच्छा खाना बनाया, तो हमारा दिन बन जाता है। हम अच्छा काम, हम समराइज करेंगे तो समराइज करके बच्चे को अच्छे से याद रहेगा कि हमने क्या पढ़ा है। ड्यूरिंग द लेक्चर हम लोग क्या कर सकते हैं? ड्यूरिंग द लेक्चर हम अपनी इंस्ट्रक्शंस को शॉर्ट रख सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि जिन बच्चों को इन अटेंशन है उनको कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे suppose we tell the child to open the notebook, open the English copy book at page number 72 and start doing question number 3, तो बच्चे के लिए ये सब अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जिन 1 2 3 बच्चों को हमें पता है कि प्रॉब्लम है, एक तो उनको थोड़ा सा आगे बिठाकर हम उन्हें बोले ओपन, ब्रिंग आउट योर इंग्लिश बुक। अब जब वो बुक अपने टेबल पे रख ले, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पेज नंबर 72, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 3। ये करने से हम क्या इंश्योर कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं हमारी क्वेश्चंस को, हमारी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट। अभी मैं एक एग्जांपल शेयर करती हूँ। जैसे मेरे पास एक पेरेंट आया जिसने अपने स्कूल में इन्फॉर्म कर दिया कि मेरे बच्चे को ADHD है। स्कूल इज वेरी कोऑपरेटिव, टीचर इज वेरी कोऑपरेटिव, तो उन्होंने टीचर को बता दिया। सो टीचर अश्योर्ड देम कि मैं आपकी हेल्प करूंगी, तो मैं वरुण को इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सिंपल तरीके से दूंगी, और अगर वो नहीं फॉलो कर रहा तो मैं उसको पॉइंट आउट करके समझा दूंगी कि वरुण पे अटेंशन। उससे क्या हुआ, a couple of days later वरुण came home and said मम्मा टीचर सबके सामने मुझे पॉइंट करती है, बाद में मेरी क्लास के बच्चे मेरा मजाक उड़ाते, और मैंने कोई गलती नहीं भी की होती तो बच्चे मेरा नाम लगा देते।
दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन सिनारियो। अब अगर एक बच्चा नॉटी लेबल हो गया तो जरूरी नहीं है कि सब गलती सब प्रॉब्लम्स वही क्रिएट करेगा। मेनी टाइम्स अदर चिल्ड्रन आल्सो फॉर्म अ ग्रुप एंड स्टार्ट bullying that child and start using the name of that child to sort of get away from trouble and make sure that that child is caught whenever there is a problem. तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? उस सिचुएशन में हम कुछ नॉन वर्बल की यूज भी कर सकते हैं। नॉन वर्बल की यूज का मतलब होता है जैसे हम कुछ ऐसे जेस्चर्स यूज कर सकते हैं जिससे हम बच्चे को पॉइंट आउट भी कर दें और बच्चे की प्रॉब्लम के बारे में पूरी क्लास को पता भी ना चले। उसके लिए आप पहले बच्चे को स्टाफ रूम में या अपने पास बुलाओ और उसको बताओ कि बेटा, जब मैं टेबल पे स्टडी आपके टीचर्स टेबल पे 2 टाइम्स टैप करूंगी इसका मतलब मैं आपको बुला रही हूँ। या फिर कोई और जेस्चर्स जैसे इफ यू आर गिविंग एन इंस्ट्रक्शन इन द क्लासरूम देन यू कैन वॉक डाउन द कॉरिडोर इन द क्लासरूम बिटवीन द 2 रोज एंड देन यू कैन टैप द शोल्डर ऑफ द चाइल्ड ताकि उसको लगे कि हाँ मुझे ही बुलाया गया है। और यू कैन walk and stop right at their desk and point on their table so that they know कि ये मेरे लिए मैम बोल रही है, याद करो बेटे कि पेज नंबर 72 ओपन करना है, क्वेश्चन नंबर 3। So you don't really have to speak the name of the child, but you can point them out at a specific position or give them some non-verbal cues. इससे बच्चा पॉइंट आउट भी नहीं होता, सिंगल आउट भी नहीं होता, बाकी बच्चों की नजरों में भी नहीं आता। सो यूजिंग क्यूज, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव क्यूज इज अ वेरी वेरी गुड मीन्स ऑफ डूइंग दैट। फिजिटी टॉयज का मैं एग्जांपल शेयर करूंगी और ब्रेक्स के भी कि हम किस तरीके से ब्रेक्स ले सकते हैं। ऑन एन एवरेज एक एवरेज बच्चे का अटेंशन स्पैन 15 से 20 मिनट का नहीं हो सकता। इसके बाद बच्चे थक जाते हैं। और अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो उनका अटेंशन स्पैन उससे भी कम होगा। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन विद एडीएचडी तो दे विल हैव वेरी स्मॉल अटेंशन स्पैन। तो हमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद उनको ब्रेक्स देनी पड़ेंगी। तो ब्रेक्स कैसी हो सकती हैं? जैसे हम उनको पानी पीने के लिए, पेंसिल शार्पन करने के लिए बोल सकते हैं। और कुछ चीजें हम खुद के बिहेवियर में भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं कि वो हमेशा ही बैठ के काम करें तो हम उनको एक ऑप्शन दे सकते हैं कि अगर उनका बैठ के करने का मन नहीं है तो कुछ समय के लिए दे कैन स्टैंड अप एंड राइट एंड देन सिट अगेन, ताकि उनकी जो फिजिकल एनर्जी है वो थोड़ी सी निकले। पानी, पौधों को पानी दे सकते हैं या और सिंपल चीजें जैसे व्हेन वी वर स्टूडेंट्स so teachers used to tell us to rub the board, collect the notebooks of other students, submit them to the teacher's desk या मार्किंग के लिए बुक्स दे दो, क्वेश्चन पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ये वाले काम भी हम जिन बच्चों का हमें लगता है कि अटेंशन स्पैन छोटा है उनको दे सकते हैं। फिजिट टॉयज का मैं एक एग्जांपल शेयर कर रही हूँ। कुछ टॉयज इसमें से स्कूल में यूज किए जा सकते हैं, कुछ बहुत डिस्ट्रैक्टिंग रहेंगे। हाँ, इसके थ्रू हम एक एग्जांपल जरूर ले सकते हैं कि हम अगर बच्चों के एक हाथ में, सो उससे क्या है कि जैसे कुछ इरेजर्स दे दिए या जैसे कोई पेंसिल टॉप्स दे दिए जिससे बच्चा फिजिट करके थोड़ी देर के लिए अपने कंट्रोल कर सकता है, तो वो हम उनके लिए कर सकते हैं। जब हमने उन्हें काम असाइन करना है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट कैन बी अ क्वाइट एरिया वेयर दे विल गेट वर्क डन। हम उनके असाइनमेंट्स को शॉर्ट टर्म असाइनमेंट्स में वर्क भी सबमिट कर रहे हैं तो इन बच्चों को अप्रिसिएशन की, सपोर्ट की, हेल्प की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि उससे इनका कॉन्फिडेंस बनता है और उससे इनकी प्रोडक्टिविटी भी बनती है। तो पेरेंट्स के लिए एक रूल हमारा रहता है कि टीचर्स पेरेंट्स को कैसे समझा सकती है। तो उसमें हम बताते हैं कि देयर आर 5S टेक्निक। इन 5S टेक्निक वी से दैट यू हैव टू स्टे पॉजिटिव, नंबर 1। Number 2, you have to set clear expectations. Clear expectations matlab you have to tell them that I'm not expecting you to clear your exams with 90%, but I'm expecting you कि पिछले वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन की गलती की थी वो इस बार नहीं करोगे। Sleep hygiene, like uninterrupted sleep of at least 8 hours for children. And we need to make sure that they are trying to sleep at the same time and wake up at the same time. जो अभी की करंट रिसर्च है वो ये कहती है कि अगर आपकी कोई सुपर पावर है, नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन बट फॉर एडल्ट्स ऑल्सो। हमारा ब्रेन इस तरह से बना हुआ है कि अगर हम स्लीप को एक प्रायोरिटी देते हैं तो हमारी लर्निंग तो इम्प्रूव होती ही है। I met one of my friends couple of days ago. He's a cardiologist. So he told me to list
कि तुम हार्ट अटैक प्रिवेंट करने के लिए अपनी लाइफ में क्या करोगे. सो आई टोल्ड देम दैट आई विल वर्क आउट, आई विल ईट वेल, आई विल प्रोबेबली sleep well, and I don't know, I couldn't think of the fourth answer. So he told me, you are saying the right thing, but the order is a little off. The first thing that you need to ensure is sleep. If you get good hours of sleep, then you're protecting your heart, then you're protecting your brain, then you're making sure कि तुम जो learn कर रही हो वो long term के लिए तुम अपनी memory में control कर रही हो. जैसे हमारी short term memory के जो packets हैं वो long term memory में shift तब होते हैं जब हम सोते हैं. उसी के साथ साथ 30 minutes of exercise और साथ में good diet, that means eating as much natural products as possible, and last is of course refined sugar or fast food जो है वो काम करना है. So these things are basically the core of your health, and for children all the more important कि हम sleep hygiene पे ध्यान दें. बहुत ओकेजनली मैं चाहूंगी कि हम अपने बच्चों की नींद जो है वो खराब करें, और स्पेशली वेरी स्पेशल पार्टीज. अदर देन दैट, ट्राई दैट दे गेट 8 hours of good sleep, and the sleep time is the same. Schedule their environment. ये बड़ा ही ज्यादा जरूरी पॉइंट है. मैं चाहती हूँ कि टीचर्स और पेरेंट्स इस बात को एक्सेप्शनली अंडरस्टैंड करें कि अगर हमने किसी बच्चे को जिसको ADHD है उसे समझाना है, उसे सिखाना है, तो सिर्फ बोलकर हम नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि उनकी जो शब्दों को रिटेन करने की मेमोरी है वो बड़ी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, और वो याद कर सकते हैं और वो समझ सकते हैं पिक्चर्स के थ्रू. तो किसी भी चीज को समझाने के लिए उसका विजुअल शेड्यूल बना दो. लाइक आई हैव माय चिल्ड्रन जिनको मुझे सिखाना है कि नाइट टाइम रूटीन में क्या क्या करना है. सो दे हैव टू चेंज देयर नाइट सूट, दे हैव टू ईट देयर डिनर, दे हैव टू हैव देयर मिल्क, दे हैव टू ब्रश देयर टीथ, दे हैव टू रीड अ बुक. Whatever I plan for them, I make it on a whiteboard in drawing form so that they know what I am saying. नहीं तो मैं 10 बार बुलाऊंगी, they will not listen to me. That's how children with ADHD behave. They behave in such a way because they can't really process verbal instructions. तो उनको हम visual schedules बना कर देते हैं, और बारी बारी बोलने की बजाय हम उनको point करते हैं. Say this is the time to have your meal, this is nap time, this is tuition time, this is play time. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जस्ट वेट. स्लीप में हम समझाने के लिए पेरेंट्स को वर्क करेंगे दैट दे अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ स्लीप. एक आर्टिकल मैंने रिसेंटली पढ़ा था जिसमें इट सेड दैट आवर ब्रेन इज लाइक अ स्पॉन्ज, बट द मोमेंट वी टेक एन आफ्टरनून नैप देन इट इज अ ड्राई स्पॉन्ज. It is ready to absorb anything. So that is the best time for children to learn anything. And once you have learned, it becomes a wet waterlogged sponge. अब उसका जो water logging हो गया है sponge का, उसको फिर से dry कैसे करना है? By sleeping. When you sleep, the water that is logged on your brain as a sponge, you will be able to transfer that into long-term memory. And again, the sponge will become dry. So whatever you absorb goes into the brain through sleep. For ADHD children, sleep also is disturbed, तो उसके लिए हमें कई बार medication भी देनी पड़ती है. Again, having covered the topic of ADHD, I would like to now invite any questions if you have, feel free to ask them, because मेरे पास और भी बहुत सारे topics हैं जो मैं cover कर सकती हूँ, जैसे anger, behavior, school refusal और misbehavior. इस तरीके की options भी हैं जो हम बात कर सकते हैं. So in case there are no questions that come up, Pooja ma'am, you want to ask something? Yes, ma'am. I have received one of the question personally to ma'am. Ma'am wants to ask the students who actually show some tantrums in the class whenever they have ADHD issues and the teacher tries to be polite with them, very humble with them, right? But still the child is having a lot of attitude to show. So how to handle such children? They are very conductive in their behavior. That's a very valid point, actually. Children are very, very smart. They use the situations according to their convenience. So they can manipulate the situations very well. Here we have to understand that by
allowing the teachers to understand what is ADHD. I am no way undermining their authority or their discipline. Discipline has to be maintained in the class, and there are some clear rules and expectations that you can set up in advance, which go for every child. Like, if there are more than two disruptions, then you will be made to sit in the first bench. Or if you are talking rudely to the teacher, then you get 1 mark reduction in your exam, no matter how much you perform. Right? So you have to think of ways where you first clarify what is it that you want from them. You don't want rude behavior, you don't want them name calling in the class, or you don't want them getting up from the table. So you make a visual chart of that and set up clear rules and clear consequences according to the problems that they are going to pose. So the child before behaving like that will know कि अच्छा मैं ये करूंगा तो इसका consequence मुझे मिलने वाला है. So those Having said consequences, that, I'm sorry. yeah. I'm sorry. Yes, I'm sorry, ma'am. So those consequences can be strict also, and like we can be bit of strict with them. Is it that way you're saying? Yes, of course, you can be disciplined and firm with the children, and I think it is purely a judgment call which corrective measures you will be choosing. But also, I would like to say कि अगर आपको लगता है कि जो बच्चे हैं वो कहीं पे अच्छा भी बिहेव कर रहे हैं, तो यूज अप्रिसिएशन एंड प्रेज प्रोफ्यूजली फॉर योर चिल्ड्रन, Right. ताकि उनको ये भी नजर में आए कि जो हमारा टीचर है वो सिर्फ हमारे गलती करने पर हमें डांटता नहीं है, पर जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो उसको नजर भी आता है. सो स्पेशली फॉर चिल्ड्रन whom you know are suffering from ADHD, they deserve कि हम उनको बीच बीच में प्रेज करते रहें. हाँ, पर डेफिनेटली इनडिसिप्लिन हम टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें क्लास का एक डेकोरम मेंटेन करना है. Somebody is raising a Yes, hand. yes, yes. Ms. Sridevi, you can unmute yourself and ask. Yes, ma'am. I have a question regarding a student. The student, there are two questions that I had. One, behavior with the student is that girl always have some issues with at home, because of which the parents scold her, beat her. So she often comes to me, and I know there is some problem with the child, because that's the reason she is hyperactive in the class. And she often complains that her parents beat her very badly. At times, there are dark marks on her hand. Now, this is one case. And the other case is regarding a child who is good at studies, but at the same time can't complete the work, and often can't control the laughter in the class. Continuously, like the child will continuously laugh in the class. Non means giving, of course, giving breaks. So, how should we handle these in these two situations? I would like to segregate into 3 questions actually. Number first is when you have mentioned that this child who's being beaten up by the parents. First, Yes, we have ma'am. to identify the reasons for which the child is being beaten up. If it is because of her hyperactivity and her behavior issues that the child is being beaten up, then definitely this child needs assessment first, because we need to put a label on the child whether this child is ADHD child or not. If the child has ADHD, then we need to make an informed decision, and all the stakeholders, meaning the class teacher, the subject teacher, the parent, they need to be a part of the discussion, where we need to form a plan कि अगर वो हाइपर एक्टिव है तो उसके लिए क्या करना है, क्योंकि हमारे पास इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के बिहेवियर थेरेपी के साथ साथ मेडिसिन भी हैं. तो अगर हम ये प्रॉब्लम के कोर को हैंडल कर लेंगे तो बच्चे की मार खाना भी बंद हो जाएगा और इसका क्लासरूम बिहेवियर भी बेटर हो जाएगा. सो एज अ टीचर आई फील दैट यू नीड टू have a discussion maybe with the coordinator or the principal, and then if whatever route you feel is the best, involve the parents, not in a manner in which you want to complain to them, but in a manner which comes from the intention of helping the child, so that you inform the parents that you are also facing so much of trauma by the child's behavior. Let's just work on it, because we believe that child's behavior will increase, will get better with this. Now, second thing that you have noticed is that one of the parents, one of the children that you've told me about has laughter spells. Now, this is called laughter spells. It could be a part of a broader problem that is called tic disorder, जिसमें बच्चे कई बार मूवमेंट्स करते हैं. अभी मैं उसको एग्जांपल से समझाऊंगी तो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. जैसे कई बच्चे शोल्डर श्रग करते हैं, हेड मूवमेंट्स करते रहेंगे,
eyebrow movements only, they'll shrug or they'll cough in Yes, the ma'am. class a lot of times. तो ये एक involuntary movements होती हैं जिसमें बच्चे brain के signal को control नहीं कर पाते हैं, and because of that they might have laughter. Again, this child might need certain assessments to identify whether it is laughter spell. कुछ बच्चों को सीजर्स होते हैं, दौरे पड़ते हैं जिस लाफ्टर के फॉर्म में. ऑल्दो आपकी हिस्ट्री से ऐसा नहीं लग रहा, पर that you had asked me, can you remind me what was the third thing about this child only? Laughter spells wala. Child is good at studies, however, could not complete the work in time. As a, like just now I Yeah, heard so you saying about assignments and all. So that is similar to the child. However, yeah, so very good at speaking skills and very good at completing the theoretical subjects. okay, so I am going to address this problem again. It is another disorder that you need to identify, that is called specific learning disability. I hope that you've seen that movie Tare Zameen Par where Yes, the ma'am. child has dyslexia. It is Yes, very ma'am. similar. In ADHD, around 30 to 40 children, 30 to 40% of children will have SLD, specific learning disability, in association with ADHD. So when that happens, what happens is really the child's ability to sort of read questions, write them, attempt them is hampered. That doesn't mean that conceptually they don't understand. For example, if you teach them water cycle, they will still know that water evaporates, and then they will still try to experiment it by putting ice into the sunlight to see whether the ice has evaporated or not. But if you ask them to write the question of on a, draw a cycle of water cycle and write it in the words, they will not be able to do it because they will not be able to form the spellings. I have seen notebooks, and seeing notebooks is a common part of my OPD setting where बच्चे देयर लिखते हैं, 3-4 तरह के स्पेलिंग देयर के लिखे होंगे. एलिफेंट लिखा होगा तो उसको डिफरेंट तरीके से लिखा होगा. So again, this is a problem we have to address, that they may have dyslexia. So these 3 children that you have mentioned, all of them require complete assessment. I will just proceed a little bit. I want to read out the myths, and then I know one another person has raised their hand, and then we'll go to that person. Thank you, ma'am. Thank you so मिथ्स much. हैं कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो जाएंगी, ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो ये ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो मेडिसिन स्टार्ट हो जाएगी, और बच्चे ने उस एज से तो क्रॉस कर ही लिया है कि प्रॉब्लम्स ठीक करें, तो कोई बात नहीं, अब छोड़ो, अब तो कुछ नहीं हो सकता, या दादा दादी ने बहुत सिर पे चढ़ा लिया है तो वी कांट डू एनीथिंग, और इस तरीके की थॉट्स दैट माय चाइल्ड कैन नॉट डू एनीथिंग इन दिस लाइफ. सो दीज आर द काइंड ऑफ मिथ्स वी रियली नीड टू एड्रेस इन दिस चिल्ड्रन, कि इन बच्चों को बहुत सारी अप्रिसिएशन की जरूरत है, सही रूट कॉज समझने की जरूरत है. तो श्रीदेवी, आई थिंक आई वाज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन. I would like to go back to this person who had also raised their hand. Pooja ma'am, can you please Yes, ma'am. reach out to them? Reema ma'am. Reema ma'am. Hello. Yes. Yeah, good evening, ma'am. Actually, the child is not ADHD. The child is in class 6 and she has zipped her mouth. She doesn't talk to any teacher in her school and even her tuition classes. She's very comfortable speaking with the friends and with the, her family members. उसमें भी she has chosen, like, मैं मामा से बात नहीं करूंगी, he is very strict. मैं इस cousin से नहीं करूंगी, she is arrogant. तो उनसे वो बात ही नहीं करती. अब बिल्कुल टाइट जिप, मतलब हंसी भी आ रही है तो she controls. अगर क्लास में भी कोई टीचर बात कर रही है और बच्चे हंस रहे हैं और उसको हंसी आ रही है तो वो उसको रोकती है. उसकी अभी उसकी मदर ने काउंसलिंग करवाई VL के से भी, कुछ डिफरेंस नहीं आया, कुछ पता नहीं चला व्हाट इज द प्रॉब्लम. देन आई टॉक टू हर वंस एंड शी सेड माय मदर कंपेयर्स मी अ लॉट with her elder brother. He is very bright. Second thing she said कि मुझे सिर्फ टीचर्स और काउंसलर से बात नहीं करनी है, वो मेरे से बात करती है तो वो लिख के बात करती है. And this is really challenging for me. Honestly, in the beginning, I thought to give up. Then I thought कि यार ऐसे बच्चे भी होते हैं जो डम होते हैं, उनको भी तो टीचर्स पढ़ाते हैं, तो इट्स ओके, लेट मी गिव हर टाइम, मे बी वो खुल जाए और बात हो जाए. इट्स ओके, लेट मी वर्क ऑन दिस. एंड सेकेंड थिंग, मदर ऑल्सो सेड कि वो जो पढ़ती है वो रिटेन नहीं करता. Okay. वो भूल जाती है, उसको दोबारा रिमाइंडर देना पड़ता है, अच्छा ये पढ़ा था ना ऐसे. Right. And she's in 6th What standard. class So is ma'am, this how child can in? we deal with such child? Reema, And 6.
Okay, Six. sixth सिक्स। class, ma'am. तो अच्छा मैम देखो, हाउ कैन ऐसा आई है कि डील इसको विद ना हर? थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले तो अगर हमें लगता है ना कि अगर बच्चा बारी बारी समझाने पर कुछ चीजों को भूल रहा है, तो हमें ना उस बच्चे का आईक्यू करवाना बड़ा जरूरी है। क्योंकि छोटी क्लासेस तक, जब तक बच्चे लेट्स से थर्ड सेकंड तक होते हैं, तब तक ना रूट मेथड से बहुत बार लर्निंग करके वो आगे तक चले जाते हैं। कंसेप्चुअल लर्निंग इन रियल सेंस बिगिंस इन हायर क्lasses slightly. So that's when if the child has IQ problems, let's suppose normal IQ ranges between 90 to 109. So in case that child has a problem in IQ, मान लो उसका 90 नहीं है, उसका somewhere in 80s है, that means the child has enough brains to study, but not too much कि वो बहुत अच्छा academically perform करेगा। तो technically हम इन बच्चों को slow learners बोलते हैं। तो वो आइडेंटिफाई करना बड़ा ही जरूरी है। हो सकता है इस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, पर जैसे उसने बताया दैट माय मॉम रियली कंपेयर्स मी विद अदर, विद माय सिबलिंग, दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। Now, the third part and the most interesting bit that you have shared is that the child is selectively communicating to people. So, in our language, it is called selective mutism. Read about it, you will understand, and probably you will be able to get a lot of similarities in what you are saying. I had 2 3 patients of this kind. इसका जो जड़ है, जो root cause है, that is anxiety. एंजाइटी जो उनकी हैंडल नहीं हो पा रही है, जो उनकी मैनेज नहीं हो पा रही है, तो उसको हम जब ट्रीट करते हैं, हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सीबीटी से करते हैं। पर कई बार कुछ केसेस में छोटे बच्चों में भी हम मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। सो द चाइल्ड इज इन क्लास 6, मोस्ट लाइकली द चाइल्ड मस्ट बी 12 और 13 इयर्स ऑफ एज। तो उसमें हम बड़े आराम से मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं, अगर हमें लगता है सिलेक्टिव म्यूटिज्म ही हमारा डायग्नोसिस है। और जब हम सीबीटी करते हैं, इंटरेस्टिंगली हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के साथ बच्चों को कम्युनिकेट कराना स्टार्ट करते हैं। लाइक यू नो, देयर वाज दिस यंग गर्ल हु वाज नॉट स्पीकिंग टू एनीबॉडी, बट द मदर शोड मी वीडियोस की वो अपने घर में अपने कजिन्स के साथ बैट बॉल खेल रही है और चिल्ला रही है और टर्न्स ले रही है, एंड शी इज रियली हैप्पी एंड लाउड, but she was not speaking even a single word in front of us or in the classroom or in front of any other stranger. So slowly and gradually we started making her stand in front of the mirror and started speaking rhymes and songs that she would like, and then we recorded her videos. We asked her mother ki छुप छुप के ना इसके वीडियोस रिकॉर्ड करो जब ये बोल रही होती है और हमें दिखाना। तो हमने वो वीडियोस देखी, साथ में उसको दिखाई। तो व्हेन शी सॉ कि हम उसके बोलते हुए की वीडियोस देख रहे हैं, तो उसके बीच बीच में शी वुड लाफ, शी वुड फाइंड इट फनी। Then maybe it started from a word, then second word, then she got cozy with one therapist, and that therapist then introduced another therapist in the therapy sessions, and then we had challenges for her कि like थेरेपिस्ट ने मदर के सामने जाके बात करनी थी, बिकॉज बच्चा ये भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा था कि मैं थेरेपिस्ट तो बात कर रही हूँ, पर मदर को नहीं पता लगना चाहिए कि मैं थेरेपिस्ट से बात कर रही हूँ। तो वो शाइनेस आ जाती थी। सो इन अ वे वी हैव वर्कड अराउंड सिचुएशंस वेयर सिलेक्टिव म्यूटिज्म थ्रू थेरेपी वी हैव वर्कड ऑन, एंड वी गॉट वंडरफुल रिजल्ट्स। देयर वाज दिस पेरेंट जिसके घर पे कुछ प्रॉब्लम आपस में भी चल रही थी, जैसे उनकी आपस में डोमेस्टिक problems थी, mother and father, and that was one of the reasons why the child was not speaking too much. तो कई बार मैम underlying reasons भी होंगे। Yes, ma'am. हाँ, ये मुझे लगा बिकॉज फादर वॉज गोइंग अंडर डिप्रेशन, वो वर्क पे भी नहीं जा रहे थे अपने, एंड मदर टुक ओवर द बिजनेस। उसको करना, अभी जाना शुरू हो गए हैं फादर उसके, एंड उस टाइम पे ये भी इशू था ड्यूरिंग कोरोना, उनको काफी प्रॉब्लम आई थी। तो मदर बिजनेस संभाल रही थी, मदर के पास टाइम नहीं था। जो मुझे दिखता था कि मदर शायद अपनी एंजाइटी और अपना स्ट्रेस जो है थोड़ा सा ट्रांसफर हो रहा है उसका भी बच्चों पे, क्योंकि वो करा नहीं पा रही। अपना बड़े बच्चे को डेफिनेटली उसने टाइम दिया होगा, वो एक्सेल कर रहा है, अब छोटा नहीं कर रहा है, ये भी मदर्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये मुझे एक रीजन ये भी लगा, बट प्रॉब्लम इज पेरेंट्स आर इन डिनायल मोड, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हाँ हम भी कहीं पर कुछ गलत कर रहे होंगे। यहाँ बहुत दिक्कत आती है, हम उनको समझा ही नहीं पाते हैं। मैम एक्चुअली क्या है ना, जब हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद बड़ा जरूरी है कि एक इंटरमीडिएट पर्सन
ये प्रॉब्लम्स को पेरेंट्स को समझाए, क्योंकि पेरेंट्स के पास कभी समय होगा ही नहीं अपने खुद के लिए। वो अपनी डेली रूटीन की लाइफ में इतना बिजी होंगे कि अपने आप को प्रायोरिटाइज करना कि मेरी मेंटल हेल्थ भी कुछ है, वो नहीं करेंगे जब तक कि वो उसका बर्डन उनके बच्चों पर नहीं आ जाता। तब वो रियलाइज करेंगे कि ओ दिस इज स्पिलिंग ओवर टू माय चिल्ड्रन, व्हिच इज व्हाई व्हेन यू हैव टू अप्रोच द पेरेंट्स, यू डोंट हैव टू अप्रोच देम कि मैम ये प्रॉब्लम आपकी है। You have to tell them ki ma'am how this problem is affecting your child. Now when it comes to the cost of the child, the parent will automatically start believing that yes it is important, मैंने अपना ध्यान नहीं रखा तो मेरे बच्चे का confidence suffer करेगा. So this is one common reason why parents eventually come to us, because then they know कि अब there is no option but to take care of their health, and they have to take care of their medical situation as well. So I think we have rounded off the discussion in a very good manner where we've addressed ADHD, we've And addressed these were the specific common learning. questions. These were actually the common questions which everybody wanted to know. Thank you. Thank you, Priyanka ma'am. Yeah. Thank you so much, ma'am. Thank you. So I was saying that we've talked about ADHD, we've talked about learning disabilities, we've talked about seizures, we've talked about laughing spells, we've talked about tics. And these are 5 very common problems that automatically came up in our discussions, because these are the common things that are there in the children, but we are not able to pick them up. Now, these are a couple of don'ts that I want you to see and read. I'm sure most of you have already read them by now. मैं बुलिंग वाला टॉपिक स्किप करके एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाने वाली हूँ, बिकॉज दैट्स समथिंग दैट्स वेरी क्रूशियल. अच्छा, वैसे हम ये रोल प्ले के फॉर्म में करते हैं. Is it possible, Pooja ma'am, for you to pretend and be the child and I can be the mother? Sure, ma'am. Sure. Thank you so much. Your dialogues are written here. You have to pretend that you are a child and I'm your mother, and I have taken you to a doctor, and the doctor has given you one injection. And the doctor has said that, you are going to get injections every week now, because that will take care of the sneezing that happens so much, and it will take care of your allergies. Okay. And you just have to be in denial and be a cranky kid who's in pain, and the dialogues are written. Right. Okay? This really scares me actually. Okay. Right. Let's Right. start. ओके बेटा, द डॉक्टर हैज सेड कि आपको एलर्जी है ना, तो आपको ना इंजेक्शंस लगेंगे हर वीक, और ये ना मुझे पता है कि पेनफुल है, पर ये आपको हेल्प करेंगे कि आपको इतनी एलर्जी ना हो और आपको इतनी स्नीजिंग ना हो. Oh, but mom, the doctor nearly killed me, the injection, I don't like it. मुझे बहुत pain हुआ, and I will not go to get injection next week. This is not done. बेटे ऐसा नहीं होता, थोड़ी सी तो पेन होती है. यू आर ओवर रिएक्टिंग. No, mama, you never listen to me. बेटे you only say like this. You are behaving like a small baby. No, mama, I'm not feeling any pain further. I'll not go further. बेटे ऐसे नहीं होता. देखो आपके ब्रदर भी तो लगवाता है ना इंजेक्शन, तो क्या हो गया अगर लगवाना है तो. No. I'll not go, mama. I'll definitely not go. It pains sometimes, but when it is injection, it pains more. So otherwise, I don't have an issue. I'll not go further. बेटे ऐसे नहीं करता. देखो डॉक्टर ने बोल दिया अब जाना तो पड़ेगा. आई कांट डू एनीथिंग. स्टॉप बिहेविंग लाइक अ स्मॉल किड. Okay, thank you, Pooja ma'am. Thank you so much for this impromptu session. Before I go further, I want to invite you to please raise your hands and tell me how do you think the child might have felt during this situation? Okay. Anybody could answer. Ma'am, what do you think how you felt while you were answering this question? I felt like that while crying, I can actually overpower you. And if I'll cry, I'll definitely make you understand that yes, I'll not go, and you will listen to me because you are seeing me crying. आप मुझे रोते हुए देखोगे और आप ज़्यादा convince हो जाओगे. So you'll But not. do you think that the mother was helpful, or the mother was able to understand what you were saying? Yes, mother was able to understand definitely. She was knowing that I'm making excuses and all. I think the opposite. I think the mother was really firm and disciplined, and she was just trying to undermine your problem and say कि जाना तो पड़ेगा ही. जाना तो पड़ेगा ही. That is also one of the fact, ma'am. Yes, I guess Miss Sridevi, she wants to say something. I Yes, felt the same because mother was again and again saying, "You're not a small kid. Now you have seen your brother ma'am. taking." So somewhere, I felt that each child is unique and there's no comparison that just because the brother has taken, so the child, because this is exactly the same scenario in one of my student. The brother is extremely intelligent and the younger child, the girl with about whom I had spoken earlier, she is like that.
So the comparison shouldn't happen over here. Rather, try to explain why she has to take the injection. I don't know Yes. whether I have answered the Yeah, question yeah, as yeah. ma'am You have asked. completely answered and hit the nail on the head where I wanted somebody to pick up the fact that the mother was overbearing. She was not helpful. She was not validating the child's feelings. She was on and on about how you're being a small baby. Yes. And she was comparing her child to the sibling, which is really unfair. So now, having said that, Devi ma'am, would you be able to participate in the next role play? The situation remains the same. I will not prompt you with the dialogues, and I will just say the thing that mother had said to the child once, and we'll try to attempt another role play. Is it possible? Yeah, Devi ma'am. I can do, ma'am. So Miss Sonam is saying she can do it. Oh, wonderful. Thank you. Thank you so much for volunteering. Okay, Sonam, I'm going to address you like a child. Okay, the doctor has said, Sonam, that you have an allergy और आपको ना हर हफ्ते injections लगेंगे. ये injections painful हैं, but they will help you and they will help you not sneeze so much. No, doctor, but it kills me with the injection. हाँ बेटे दर्द तो होती है ना आपको डर लगता है No, I will not go to get injection next week. it pains you where does it how much does it pain A lot. I cannot bear that pain. oh I know that it hurts a lot doesn't it but you know what if there was a magical way that you got an injection and that it never hurt you wouldn't that be great No, no, no. Injection can never hurt. Always hurt. yeah but you know what if it's a magic what if it's not a real injection but magical injection A magical injection. yeah that doesn't hurt How? I wish they made some injections like that. Don't you think so? They should do something like this that makes some magical injections that never hurt. They should prepare that. Yeah, I know that it'll pain a lot, but beta, you know what? We have to get it done. Mama is with you, but you know what? I think when the injections will be over, you will be very, very happy. Okay, let's try. But अगर पेन हुआ तो मैं दोबारा नहीं लगाऊंगी. So yes, I guess it was very clearly visible, Priyanka ma'am, that if the convincing is to be done this way, like, rather than making any comparison, definitely Then how children, did they listen. Definitely the children, they listen. Yes, yes. mother listened to it? And also, mother did a couple of things. Can somebody point out? Can somebody point out what was it that the mother did in this role play that was different from the previous one? And then I will share my next screen to shed May a... I answer, ma'am? Yes, Yeah, yes. yeah, ma'am. Please go ahead. Ma'am, the way you had asked regarding pain hota hai, kahan hota hai, kya hota hai, the way you had tried to probe into or tried to explore into the matter, the situation, issue ko. Earlier, 2 minutes back when you were talking, I lost the connection. But then from here, I listened to your talk. So this is what I felt. Yes, yes. Yeah. And people are also commenting on the chat that the mother understands the child, that she's very concerned, and mother was pampering the child. So all of these are correct answers. I tell And the you mother, what was... I and the think it mother was feels like also, mother ma'am. is with Excuse me, me. ma'am. The Excuse me, child ma'am. feels like mother is on my side. Yes. Ma'am, Yes. excuse me, am I audible? Yes, yes, Yes. Viji ma'am. Yes. You may please certainly I, raise your hand before you unmute yourself. I did, ma'am. 5 times I did. Yes, yeah. Yes, please go ahead. The thing is, I felt the mother was actually indirectly preparing the child for, yes, that there will be pain, but it will do good to you. Mentally, the mother was also assuring there will be pain, but more than that, sneezing will stop if you go through this. So subtly, that was the message also. Yes, Thank yes, you. definitely. She tried to make things lighter. Yes, that's also true. So I will now dissect what I was trying to say, and there's a quick go-home message for all of you to read. Mother also did something really interesting. Let's compare these two responses. Mother said in the first role play, mother said, "Come on, it cannot hurt that much. You're making a fuss. Your brother never acts like this, and you're acting like a baby." But in the second role play, the mother said, "It sounds like you're really hurt. Is it hurting that bad?
Wouldn't it be great that we discovered a pain-free way of delivering injections? What if there was a magic like that? And I know it's not easy to get these injections, but I'm sure you will be happy when they're over. So these two responses I need you to compare, and this is what I want to teach you. Shweta ma'am, you've raised your hand. Let me just quickly finish what I want to say, and then I'll come back to you. Listen, acknowledge, name, and grant. This is what the mom has done in the second role play. I really need you to focus on this, and this is our take-home message. Listen with 100% attention when your child is saying something. Suppose you have something on the gas burner. Suppose you are doing something else or on the phone with somebody else, but your child comes running to you and wants to say something. Try to stop what you're doing and pay attention. In case it is not possible for you to pay attention right at that moment, you take that conversation and address it as and when it is possible, but don't forget it. Consider your child like a colleague. आपके colleague ने आपके पास आकर बोला कि 1 मिनट मेरी बात सुनना, और उसी टाइम पे आपको प्रिंसिपल मैम ने बुला लिया and you had to go. What will you tell your colleague? मैं 5 मिनट में 10 मिनट में जब वापस आऊंगी तो तुमसे बात करूंगी, मुझे अभी मैम ने बुलाया. और बाई चांस आप अपनी फ्रेंड से नहीं मिल पाते और कॉलीग से नहीं मिल पाते, शाम को आप कॉल करते हो, अरे तुमने मुझसे कुछ बात करनी थी, मुझे मैम ने बुला लिया, हमारी बात बीच में अधूरी रह गई. हम एक दूसरे को ये रिस्पेक्ट देते हैं that my conversation was left pending, I want to talk to you. Why don't we give the children the same respect? Second is acknowledge. बच्चे को दर्द हो रहा है तो acknowledge कर सकते हैं ना. ओ दर्द हो रहा है, कितना, कहाँ पर, कैसे. बच्चे को लगता है वो मेरी बात सुन ली, दर्द तो कम नहीं होगा, पर कोई सुनने वाला है, right? Third thing, we know that we talk about education, we talk about literacy, numeracy, we talk about STEM, we talk about so many complicated words, but we don't talk about emotions. Name the emotion that you think the child is feeling. You think the child is going through hurt, pain, frustration, name it for them. Give it a word so that tomorrow if they are frustrated, tomorrow if they are humiliated, tomorrow if they feel rejected, tomorrow if they feel left out, they are able to come back home and instead of sulking and crying, they are able to put it into a sentence and communicate to you, Mama, I felt bad because my friends asked other people for their birthday party and did not invite you. I felt rejected, I felt hurt, I felt dejected, I felt out of place, whatever it is. So it is our duty from the very beginning as teachers, as parents, as caregivers of young persons to sort of make them understand the language of emotions. That's how we prepare them for accepting their emotions and then in turn dealing with them. Last and a very magical thing is that grant the wish in fantasy. Like the mother said, oh, I wish there was a magical way of delivering the injections and that would not hurt. So the child got really hooked. I know the child was really bent upon not giving in to the mother's demands, but the child was caught up in the magical fantasy. Ki, oh, I wish magical, फिर पेन नहीं होगा. And ऐसे ही हम बच्चों के साथ डील कर सकते हैं. I had a parent who said that my child would want to wear pajamas to a wedding party. And I want her to wear a dress and look pretty and not wear pajamas to a party. So I told her that why don't you grant her wish and fantasy and then talk about how you think that everybody will wear pajamas in a wedding party and then you can call it a pajama party and then you can dance in it and then you can talk about it. So next is when we grant the wish and fantasy, we really tell children that I know you are going through a trouble, I cannot solve it for you, but we can grant it, right? I am done with my talk. One ma'am was, I think Shweta ma'am was raising her hand. Ma'am, would you want to ask a question? Thank you, ma'am. Am I audible? Yes. Okay. Firstly, congratulate to you, ma'am, for such a wonderful session. Thanks for the session. And one thing I would like to speak, like earlier for the role play that you were telling, the same thing I wanted to speak, that the mother went in for the magical way, in the magic zone, that is the fantasy world which children really love to be in. So that's the way if parents or teachers can convince children that in a very bright and positive way. Hello. Yes, I can hear you. Thank you for sharing that response. I totally understand what you are saying because what happens is that
when we enter into the magical world, that at that point of time we give them an option that they can grant their wishes and fantasy, and they can overcome any difficult feeling that they are going through. So this is a summary of my talk. We have understood that most behavior problems have an underlying cause. We may find that we find it difficult to sometimes understand certain problems, and when we find it difficult to understand problems, we need to be open enough to refer the children to an expert so that they can be diagnosed in a proper manner, and you can also get guidance on that. As we discussed, ADHD, specific learning disability, tic disorder, laughter spells, all of them are difficult problems. But if you allow them, if you allow a proper diagnosis, everything has a solution. We didn't talk about bullying. So one of the options we discussed in anti-bullying squad can be developed in school so that bullying can be taken up. But yes, upskilling your communication is one of the foremost things of doing something like listen, acknowledge, name, and grant the feeling in fantasy. And yes, believe in teamwork. As teachers and as parents and as doctors, we are the stakeholders for the young generation. So we need to collectively understand that it's our responsibility to find what is the problem and get the right solution. With that, I wind up my talk. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, Dr. Priyanka. It was really unbelievable session. I guess whatever the time is being given to such things, that is always the less, because the problems are more, and we people being generally not knowing the very deep of it, we are not understanding sometimes how to sort them out, and that way comes the role of a counselor. And people like you who are serving, like who are just sorting out such problems or addressing such issues and sorting them out in such a wonderful manner, I guess it's really neat. It really requires a big salute. Thank you, Dr. Priyanka, Thank you so so much. much Thank you, for everybody. joining us on the Global Mastermind. We are here with the collaboration of AIEF. Thank you so much, dear audience. I'm sharing the link with all of you. In the meanwhile, if anybody is having any session, any query, they can definitely ask the query to ma'am, and ma'am has already displayed her contact number. In case you need to contact ma'am, you can definitely contact her. Any of the problems related to your own children or students, she'll definitely sort it out. Thank you so much, one and all. Thank you. It was a lovely session with I each need one. to ask a Yes, question. yes, ma'am. Yes, Sona, ma'am. Ma'am, actually, in my family, my nephew is having a problem with whenever she always in a negative mode. हम कुछ भी कहेंगे वो हमेशा कि मम मतलब मैंने ऐसे किया था, मम्मा ने मुझे डांट दिया, मतलब हमेशा ही वो नेगेटिव मोड में आ जाना कि नहीं मेरे साथ तो कोई अच्छा करेगा नहीं, मेरे तो कोई दोस्त नहीं है, मैं काम कर ही नहीं सकती. So we can ये address चीज this भी क्या problem इसमें in आती है? therapy because this is cognitive distortions. Technically, जब हमारी thinking pattern गलत होती है तो हमें सब कुछ गलत दिखता है. इसका कॉमन सा एग्जांपल है कि अगर आप काले रंग का चश्मा पहनोगे तो सब कुछ काला दिखेगा, अगर आप गुलाबी रंग का पहनोगे तो सब कुछ गुलाबी दिखेगा. तो अभी हमारा जो चश्मा है उसको साफ करने की जरूरत है. वो साफ करने के लिए अगर हम सही तरीके से थेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपके सोचने के तरीके को बदलने के लिए बहुत सारे स्टेप्स बता सकते हैं. तो उसी के लिए जैसे अगर हम मतलब हमारे चोट लगती है तो हम बैंडेड लगा लेते हैं, हमें ग्रूमिंग की जरूरत है तो हम पार्लर चले जाते हैं, हमें फिटनेस की जरूरत है तो हम जिम चले जाते हैं. उसी तरीके से अगर हमारे बच्चों की थिंकिंग में कुछ गड़बड़ है तो उसके लिए थेरेपिस्ट के पास जाना कोई बहुत प्रॉब्लमैटिक बात नहीं है. हम डिस्कस कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर चीज की मेडिसिन होती है. थेरेपी के थ्रू हम बड़े अच्छे से ये प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं. बट फिर उनके पेरेंट्स को ये कन्वे करना चाहिए, अगर ऐसा है तो उनको दिखाना चाहिए किसी भी स्पेशलिस्ट को, क्योंकि So नहीं एज की वजह से everything begins from telling the parents, because unless the parents are a part of this discussion, nothing will move. So उनको भी कन्विंस करना बड़ा ही जरूरी है. और एक बार आप कंसल्टेशन सीख करो, then you will see how things change. Thank you so much. Thank you, Sonam. Thank you, Dr. Priyanka, once again. So thank you, dear audience. It was really lovely session with all of you. We'll keep on coming with such masterminds who are here and, spreading such a wonderful sessions just to aware the people that how the things can be sorted out. Thank you, one and all.
we will be waiting to meet you again in next upcoming session, which is definitely gonna to relate one more session we are going to have, which will be relating with child issues only, as this is going to be the major thing nowadays. Thank you once again. Thank you, Dr. Priyanka. Thank you. Thank you so much.